kindly put on silent mode or switch off your mobile. Please. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Krishnan and I am your Master of Ceremonies. Before we begin the proceedings, may I please request to put your mobile phones on silent mode. Thank you very much. Please rise for Vande Mataram and Tamil Thai Vazhuthu. சீராரும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிழே எக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் மிகுந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Please resume your seats. Thank you. Before we begin, according to the Vaishnavi Parampara, Ashok sir, with your permission, a small Saraswati Stavanam. Please, if you can, please sing it along with me. I'll just sing it. Saraswatim Namastubhyam Varade Kamarupinim Sabharambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Jnanananda Mayam Devam Nirmala Sphatika Kritam Adharam Sarva Vidyanam Hayagrivam Upasmahe. Thank you. Ladies and gentlemen, it is my great privilege on my own behalf, on behalf of the Models of Developing India group, which is led by Shri Ashok Bora Jain, to welcome you to the first lecture under the Model of Developing India series, to be delivered by none other than the Honorable Supreme Court Senior Advocate Shri Ashwini Upadhyay. The subject is of his choice, which has something to do with the Constitution. And we have another occasion to celebrate the one person because of whom we are all gathered here. Put your hands together, ladies and gentlemen, to applaud that single-minded,
determined efforts of Shri Ashok Bora Jain, who merely by working on the phone has got us all together to honor the spirit of being Indian, the desire to do something great for India, and all this without sacrificing anything about our identity. Thank you very much, Ashok ji. We are here because of you. The brief vision about the models of developing India is to do with the concept of 5 E's. Indic or Bharatiya or Sanatana ethics, Indic ethos, Indic economy, Indic education, and Indic environment. Fittingly, this first speech is about Indic ethics, which comprises ethics, law, and justice. Who better than Shri Ashwini Upadhyay to give this speech on challenges, because we are a constituent nation. We are run by the Constitution of India. Who better than him to talk to us about what the constitutional challenges are that face us in India? Coming to Shri Ashok Jain, this conversation was held by us, a small motley group of Ashwini Upadhyay ji, yours truly, Krishna Iyengar, Swami Shri Ramcharan Arvind Das, P.N. Subramaniam ji, Dr. Pratap Hegde ji, Kumar Rakesh ji, K.U. Subramaniam ji, so on and so many people who got together, Samir Shah, who is not here, and there are a lot of people who are not here today, but all these people got together and decided that there should be a model which will not complain about the situation in India, but will suggest solutions, which will be a positive group to take India forward with concurrence, with consensus, and a very cooperative way of going forward. So that is why we are here. But the seed of the entire movement was planted by Shri Ashok Jain. Now it is my fortune, happy fortune, to be inviting our honorable guests to the dais. First to lead the entree is Shri Ashwini Upadhyay. Please, sir. I request Shri Ashok Munraji to please join us on stage. May I mention here that he is officially the host of this program. Shri Kailashji Chordia, please. On stage, sir. Kailashji is the person who first said, yes, please go ahead, I am with you. Any support and I will give it to you, is what his words were, and he is here to bless us with his presence. Put your hands together, ladies and gentlemen. Shri Ashok Kedia. He is the co-host of this function, sir. Shri Praveen Tatia. Ashok ji. Now, a member of the models of developing India and somebody who is our spiritual anchor, Swami Sri Ramcharan Arvind Das. Mr. Kumar Rakesh, another senior member, who is the media face of
models of developing India. He is our guide. For all things to do with communications. Kumar Rakesh ji. Please be seated. To mark the inauguration of this Sabha, may I request our founder, Shri Ashok Bora Jain, Shri Ashok Ji Mundra, and Shri Ashwini Upadhyay to light the Kuti Vilake and bring light to our lives. In the meantime, ladies and gentlemen, may I just briefly introduce you to the concept of what we are about to see and hear. Let us begin by the introduction of the guests. I have great pleasure in introducing Shri Ashwini Upadhyay, who really requires no introduction. He is a famous social media personality. He is a famous practicing advocate, senior advocate of the Supreme Court. But his passion really is things to do with India, the securing of rights of citizens, and his weapon of choice is the public interest litigation. He has more than 50 PILs filed. 150, I'm sorry sir, I missed the one. 150 public interest litigations filed with the Supreme Court. So much so that the Hindi media is calling him शिकायतों के महाराजा. आखिर ये वकील साहब चाहते तो क्या चाहते हैं? तो until you, there is a proverb in Tamil, Azharapullaidan paal kudikum. So until you protest, until you demand, you don't get anything, is what the sequencing is. He is a constitutional expert and an expert in dealing and securing the right to identity, right to identity, right to religion, right to culture, and right to justice. All these things put together equal Sanatana Dharma. So, Vakil Saab is really advocating Sanatana Dharma in the highest court of the land and trying to give the majority the rights that they have forgotten and they should be enjoying and having. Thank you so much, Vakil Saab. This is something which blesses us, and in the course of our nation building should be the first stepping stone in the corrected version of things which will follow soon. Thank you so very much. Next, it is my honor to introduce, we will have the lighting of the Kuti Vilak, please. Ashwini ji.
Shri Ashokji Mundra heads the DG Vaishnava College family of institutions, and his long service, I think, would take this entire session to describe for the service of education, both at the school and at the college levels. We are running against time, and I believe I cannot do full justice to the contributions and services of Shri Ashok Mundraji. You will forgive me, sir, for keeping the introduction so brief. Shri Kumar Rakesh is a doyen of the media and has served both in Parliament and outside Parliament. He is an award-winning journalist. He has virtually traveled to all countries of the world. Am I right, sir? The only country that exists on paper and he has not traveled to is the United States of Kailasa. He has traveled to Kailash Mansarovar. I don't deny that, sir. You have to. Swami Sri Rama Arvind Das Arvind, Charan Das Arvind belongs to the ISKCON family, and is our spiritual moor for the Models of Developing India group. He is here in his capacity. In his Purvashrama, he has been a veteran in the finance industry, insurance industry, and fintech, basically. But it gives up everything and comes to the path of Krishna consciousness. This is one courage I can't muster, despite being called Krishna. So, Swamiji, our salutations to you. Ashokji Kedia completes the triumvirate of Ashoks sitting on the dais. Ever smiling, always accommodating, and finding solutions. I have never heard anyone go to him and come back and say that he said no for an answer. Just one small request, and he accepted our request to, be here and guide us, help us at every step of whatever we have done. Ashokji, Maro Sadar Naman. May I now request our Tat, the father of the developing models of development of India, Sri Ashok Jain, to come here and briefly state what the basis of the creation of this group is, what are the objectives, what his vision is. We are all ears, sir. Please come. वणक्कम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। माननीय स्वामी जी श्री अश्विनी उपाध्याय जी, श्री कुमार राकेश जी, श्री अशोक जी मुंदड़ा, श्री कैलाशमल जी चोरड़िया, श्री अशोक जी केडिया और श्री प्रवीण जी टाटिया, and of course Shri Krishnan ji Iyengar. Welcome and namaskar to you all. This dais is a unique combination and represented by ethos, education, communication, judiciary, journalism, technocrat, businessman, and of course, administrator. Is it not amazing?
I hope so. It's definitely amazing. And looking at the glittering stars of today's, the gathering is represented by Rajat and RYA office bearers, Swayam Sevaks, Vedic and cosmic scholars, academicians, chartered accountants, doctors, environmentalists, agri and dairy experts, cow entrepreneurs, IITMs and IIMs, and artists, and of course, politicians and social activists, and my dear media friends. Welcome and thanks to you all for your kind presence, and those who are watching live through our live relay. It's our first maiden and public program of Models of Developing India, and also my first public appearance. And moreover, it is happening in the same college where I studied 41 years before, and now it is witnessed by my seniors, Sri Ashokji Mundra and Sri Ashokji Kedia. I want that great grand applause for these entire people. I am blessed by you all. This is all because of 4 words, which is the part of everybody's life. प्रकृति और नियति अपने पूर्व निर्धारित कार्यों को पुरुषार्थ एवं निमित्त से सफलता हासिल कर ही लेती है. अब प्रकृति and नियति is already pre-decided. Purushartha, it is because of you all presence. And Nimit is Sri Ashwini Upadhyay. So, when Nimit is on the dais, we are all eager to hear your thoughtful thoughts on constitutional challenges. Let all give him a big round of applause to Sri Ashwini ji Upadhyay. PIL list is such a long, I think 150, such a long. To read and understand, it takes so much time. Please imagine how much time it will take for the implementation. Sir, Chennai audience is always a thoughtful and graceful and knowledgeful audience, sir. We would like to be part of your vision and mission for Bhavya Bharat. My core team members of Models of Developing India, who are present here, Sri P.N. Subramaniam ji, Srinivasan ji, Srinivas Subramaniam ji, Saravanan Sundaramurthy, and of course, our one of best pillar, Sri Pratap ji Hegde, who is silently just sitting on the first row, who doesn't want to come in the public appearance. Sir, my all thanks to you all for your love and affection, the support which you have been given for almost more than 9 months. Abhinandan to Ashwini Upadhyay ji's family members who are part of this mission. Once again, my heartfelt thanks to all of you. Spite of people have traveled even from Mysore and Bengaluru, people have come from Salem, people have come from Madurai, only for to hear this Nimit Sri Ashwini Upadhyay ji. Let's give a grand applause and once again pranam and thanks to you. And finally, होली की शुभकामनाएं और भारत
माता की, भारत माता की। Thank you, Ashok sir. We don't need any other extra dose of inspiration, do we? We talk with him on a daily basis, several times a day. So you can look at the enthusiasm levels we have. Thank you so much. May I now request Shri Ashok Jain to honor Shri Ashwini Upadhyay ji on behalf of the Models of Developing India Group. I would like to invite Mr. K.U. Subramaniam. KUS, please. K.U. Srinivasan. K.U. Srinivasan, please. Sorry. Yeah. Srinivasan ji, please come on stage. Swamiji felicitating Shri Ashwini Upadhyay. Mr. K. Srinivasan to honor Shri Kailashji Chaudhary, please. Mr. PNS to come on stage, please, to honor Shri Ashok Mundra. Dr. Pradeep Hegde, please, to come on stage. Pratap Hegde to come on stage. To honor Shri Ashok Kedia. Swamiji can stay on stage to honor Shri Praveen Tatia ji. Tatia ji has been so cooperative, so helpful, and so forthcoming in using his good offices in the Rajasthan Youth Association and Rajat to provide with all help, all help. I simply can't thank him enough. Thank you so much, ji. On my own behalf and on behalf of Models of Developing India, I have pleasure in giving the only metal mirror, Aranmula mirror, to Ashwini ji Upadhyay, so that he continues to show this mirror to all of us, to society, to himself. But I know for sure that it will be Mrs. Upadhyay who will be making most use of this. It is now my good fortune to honor Swamiji, who is on the stage, and after that, Kumar Rakesh ji, who is my bandhu.
The DG Vaishnava College family of institutions wants to honor a few people here on the stage, starting with Shri Ashwini Upadhyay. Shri Kumar Rakesh. Dr. Pratapji Hegde. Swamiji. Lakshmi Chandji, please come on stage. I request Shri Ashok Bora Jain to do the honors to Lakshmi Chandji. I know that there are a lot of people here who have come with small gifts and their own way to honor Ashwini ji. Can we wait till his speech is over and then we can continue with the felicitations? I'd now request Swamiji to give a brief introduction of what he thinks we should be doing and where we should be going. Immediately following him, I would be requesting Kumarji Rakesh to make the Hare Krishna. Thank you for all who have come here to make this function a grand success. Today has been a very wonderful day because our Ashok ji, who has been envisioning this entire event for the last 2 months or so, I would say. From January itself, we have been thinking about this event, how to make it as a grand success and how to make it known to the people in Chennai that a person like Shri Ashwini Upadhyay ji should be brought to this place so that the people of Chennai understand the importance of what and all work he is doing sitting there in Delhi. So we are also very honored to have a chief guest like you, sir. First, to give a small, I won't take much time, but before I give a small introduction, I have to tell about the gloriousness of Shriman Ashok ji, Ashok Jain Bora ji. Because what happens is that there is I always call him the man who goes and picks the pearls out of the ocean. See, whenever you have seen a pearl necklace in your life, what you must have seen is a pearl necklace always has a unilateral pearls. Either it is the South pearls or the Gulf pearls or the Indian pearls or even the African pearls. What he has done is he has actually brought together a necklace of so many pearls who are all different varieties altogether. He has brought one from the field of journalism. He has brought one from the field of educational and technology. He has brought one expert from the other field of even philanthropy. So he has brought multiple people from varied walks of life. So that is the gloriousness of this gentleman, and I am very, very highly indebted to him to form this wonderful organization called the Model of Developing India Think Tank Group. I don't understand why he picked up me, and I don't know what I'm going to help him in this entire event, but I'm also very much thankful to the entire event what he has done. Now, the
topic today, which our Ashwini ji is going to speak, is about constitutional challenges. Now, the point here is that first I want to touch upon two little points before I share the days with him so that he can continue with this entire discussion. The Indic way or the traditional India or the Bharat had a very different concept of giving justice to people. In the traditional setup, what used to happen is the justice was very, what I call is, justice should be done and justice should be seemed to be done. That's what Lord Hewart used to say. And that's what used to happen in the traditional India. The kings used to be the judge. The common man used to walk to the court of his, darbar or whatever you call. He has his own way of, having the problems. It is being told to the king or his representative, what you call zamindars or whatever you call. And those people, what they used to do, they used to give instant justice to them. He hears both the parties. He understands what's the problem. He understands what is the issue behind it. And he tries to give instant justice to them. Justice was done. Justice was seemed to be done. Today, what we are in a state of, complete complex concept called the Constitution. Maybe like a common man like me, Constitution seems to be much more complex. But what is happening is, justice seems to be much more delayed. Justice seems to be not done. Justice not to be given. Justice delayed is justice never done, is what some people say. Now, the other point, which also I want to talk about, the thing that there is something called dharma. In the actual concept of dharma, there are two things which has to also be done. In the dharma, what also it does is that the dharma should be not having any discrimination against people. Today, what used to happen is that that's what exactly even Srimad Bhagavatam says, or the Pavishya Purana also says that in the Kali Yuga, that the justice will always be done through balam, karanam balam evahi. That if you have the power, if you have the money, then justice can be easily done to you. So today it is not that much different from what you are seeing, that many of the times there's conflict of interest. There is, many much more things which are not even complex that the common man, like many of us who are sitting here, many of them might be even experts in law, but other than that, many of them find it very, very difficult to understand. So we need your beacon of light to show us how it's also possible that a traditional India or even a model of developing India could be achieved through constitutional means. Before concluding, I also want to tell that recently I came to know that there are some countries where there is no written law, written constitution, like the England, or even some of the places where there is no written constitution. And it seems that the justice is being delivered much more earlier, in a much more lesser time than in many of the constitutions which are written way. Now, why this is happening, whether again it goes back to the traditional India, where the kings used to give justice very immediately to the people, or we need this kind of complex system. Now, finally, to conclude, I would always say India is still India. Bharat is always Bharat. Either you see the prism through which you are going to see it. Today, we have come across is a confident India. After what we have done in 1991 and today, we are a confident India. We are showing it to the world that we can become the Vishwaguru. And one of the important aspects of becoming the Vishwaguru is to show to the world that justice and the ethos and the culture of this country always is not discriminative. It's always equal to everyone. And it's very, very, very possible that a common man can knock to the highest court of Supreme Court and get justice at the earliest possible time. Thank you so much for giving this opportunity. Shri Kumar Rakesh, please. नमस्कार और सबसे यहाँ जो लोग हैं उनको नमन, जो स्टेज पे बैठे हैं सभी उनको भी नमन। और कार्यक्रम मैंने अपनी बातचीत शुरू के पहले उस गुरु को भी नमन जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्म तस्मै श्री गुरु ब्रह्मा। साथ साथ देश की बात है और सबसे मेरा अनुरोध है, एक साथ बोलेंगे 3 बार, भारत माता की। पूरी आवाज़ नहीं आ रही है। पहले भी 2 बार मैंने देखा, जितने लोग बैठे हैं वो एक सुर में आवाज़ आना चाहिए, भारत माता की।
ये मुट्ठी बांध के हाथ को ऊपर करके पूरी एनर्जी के साथ, जिसके लिए हम लोग बैठे हैं, डेवलपिंग को डेवलप बनाने के लिए एक संकल्प है, जो नया भारत का संकल्प है, संकल्प से सिद्धि तक। और जो सिद्ध जो लोग हैं और जो सिद्ध होना है, हम उस कड़ी में हैं, और आप सभी लोग सिद्ध हैं, तभी आप लोग यहाँ पे आए हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे, आवाज नहीं आ रही है, वंदे, वंदे, जय हिंद। हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। ये जो भावना है, जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे पुराने गुरुओं ने सिखाया है, उसी को हम क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट अस ट्राई टू इन इंग्लिश एंड व्हाटएवर इफ स्टेज परमिट। एंड वेलकम अश्विनी उपाध्याय जी। दिल्ली में रहते हैं, दोनों की अपनी व्यस्तताएं हैं, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं, ये महान क्रांतिकारी कार्य जो आज तक देश में किसी ने नहीं किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 75 वर्ष का जो यहाँ लिखा है हमने, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस अमृत महोत्सव में 150 जो भी इनके आप देखेंगे, जो भी अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं, अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के महान न्यायाधीश, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन देश के लिए कमेंट करना होगा तो न्यायालय को कमेंट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देश से बड़ा कोई नहीं है, ये सब जानते हैं और सब मानते हैं। लेकिन जो बात नामकरण की बात कही इन्होंने कि फरीदाबाद का नाम बदल दो या हैदराबाद का नाम बदल दो, तो उसमें कोई गुनाह नहीं है, गाजियाबाद का नाम बदल दो। हमारे जो नामकरण की बात है, नामकरण आयोग की बात है, वट एवर ही सेड एंड ऑलरेडी प्लीडेड in different courts and going to the different courts, not for himself, just for the country, selflessly, just for the country. Whatever doing and the another states and other country, I've traveled a lot. I have been covering United Nations General Assembly since 2007. And I can't forget the day on 2015, UNGA, when our Honorable Prime Minister, global leader, Narendra Bhai Modi ji was speaking on SDG, Sustainable Development Goal. And I just counted the heads of the state at the hall of UNGA, 49 states के जो leaders थे, वो states, जो Prime Minister, whoever concerned, were in queue, made a queue to take the selfie with our Prime Minister. I was eyewitness, I make the photographs. That time Dr. Jaishankar was the Foreign Secretary and others went there. Mr. Mukherjee was, I think, PMI, Permanent Representative Mission of India in New York. So just we saw, and whatever just uniform and Bandgala coat he was wearing, just you call just saffron, just like that, whatever he is wearing, the deep yellowish. So just somewhat, Angela Merkel was asking, just nearby media, just a box, I was sitting, I was trying to hear, what is color? How do you just define it? You know, no to surprise, you all never heard, no media reported, never listened. Our parents said, this is our color of India. That's I want to share you this first time. This is our going to be models of developing India. I hear a great model for the reform, the judiciary, our Ashwini Upadhyay ji. Why I'm here? Just for the 19A. One of the just article, Ashwini is better than me, can define. I also law graduate, half LLM I passed, could not pass the exam given the time. So, BSc Honors, MA, half MSc, half LLM, complete LLB. Whatever life is there, the different story. But whatever I try to understand the law, we have so many laws, but this is only government last 9 years. I think, Ashwini ji, more than 18,000 laws are scrapped, Ashwini ji. More than 18,000 useless law. Just we are facing, I've been facing since 1947. This government. If anybody say you, what government has done? Just tell him with bluntly, 18,000 law has been scrapped by the useless law who was only just torturing the national and the Indians of our country. That's this government done. Long list. I'm not going that way. We'll just continue to the discussion. The Chennai is the foundation stone.
How is Subhash Chandra Bose was started from the Germany, and they got Japan, and then just to UK. And you'll just surprised to know the freedom movement that laid for the country, the independent India from UK, who was just ruler of the country. You will know the surprise. And Chennai and the Kerala, the two states in the Indian history. I just, when I say India, I don't like the word India, I do the Bharat always. India, that is a Bharat. That is also, I think, one amendment Ashwini ji moved, and all are just trying to lobby to this government, please delete India, Bharat, whatever said. And that should be. But if you also know it, Chandrasekhar Azad and other revolutionaries who made the association, Hindustan Republican Revolutionary Association. That time, no, Bharat was not there. There is so many fine, just your social media, when you just depend on the, it was decided on the name of religion Pakistan has made, why they are stayed here. Who did this? Why did this? Who were the culprits? The million-dollar question. We have to do it. Who our government will do in next coming stage. So the longest stage, sorry, I'm just taking 1 minute maximum. So I got the time. So this is one thing, but I just related the media. 3 points I'll just highlight here. In 2000, the media open sky policy and TV media started. 2003, I made then IV Minister Ravi Shankar Prasad. I'm part of the International Federal Journalist. I'm a part of the all 7 top media organizations of the world, from US, Africa, and Europe, and other parts. I just requested, please scrap the Press Council of India, made the Media Council of India, that may at least to see and control the TV media. Whatever answer, you know, to surprise. So that is different issue. Till today, 23 years. No any such rules and laws has been made. Government is government. So that is a lot to question, but we are here to listen our honorable friend, well-wisher of the country, Ashwini Upadhyay. Stage is yours. PIL man of India, but what he has done and has been doing the fun country, we should give the big applause and clap to him. Just I was calling for the stage for the new, and just from it started, I'll just, not the finish, and it's continuing my speech for the next one, 4-liners. सूरज से ढलना न सीखो, सूरज से उत्थान सीखो, सूरज से ढलना न सीखो, सूरज से उत्थान सीखो, दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो, देखना है हम स्वयं इस चित्र में अंकित कहाँ हैं, राह चलना न सीखो, राह का निर्माण सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा, अशोक जी का धन्यवाद, और 3 अशोक जी हैं उनका धन्यवाद, कैलाश जी का भी धन्यवाद। आज सुबह सुबह भारत के विश्व के सबसे सुस्वादु भोजन का पान कराने के लिए कुछ ऐसी रोटियां इन्होंने खिलाई कि विश्व में करीब मैं 70 कंट्री घूमा हूँ, आज तक मैंने नहीं खाई थी। तो इसके लिए भी उनका आभार, और बहुत ही अच्छे भोजन के लिए भी, व्यवहार के लिए भी, और सबका, स्वामी जी का भी, प्रताप हेगड़े जी हमारे आयंगार जी हैं। जब ये बोलते हैं तो मैं सिर्फ सुनता हूँ, क्योंकि वेद, इनके वाणी में वेद का वास है, गोत्र से लेके मूल तक सारी बातें बोलते हैं। और आप सबका आभार जो आप इस मूलाकरण में देश को बदलने के सूत्रधार के रूप में शामिल हुए हैं। ईच एंड एवरी वन आर सो इम्पॉर्टेंट, सो टूल्स फॉर चेंज फॉर अवर ग्रेट भारत। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Kumarji. All these 3 Ashoks have only one achievement after today. It is to get 2 Dilliwalas, both of them lawyers, to meet in Chennai. I think that is their biggest achievement so far. Thank you so much. I have great pleasure, and it gives me great happiness, and to humbly request the tall in every regard, Shri Ashok Mundra ji, to say a few words, because he is very keen to talk on Indic education and put his views. Who better than him to talk on education? Please, Ashok ji.
Jai Shri Krishna. Dignitaries on and off the dais. मेरी कोई हैबिट नहीं है एक एक को नाम से लेके बुलाऊं, तो आप लोग मुझे माफ करेंगे कि मेरा नाम नहीं लिया. Dignitaries on and off the dais. जय श्री कृष्णा to one and all. अभी हम लोगों ने जब प्रोग्राम चालू हुआ था तब सबसे पहले वंदे मातरम गीत सुना था. अब आप कंपेयर कीजिए वंदे मातरम गीत जब आप गाते हैं तब आपके अंदर से आवाज़ आती है, और जब आप जनगण मन गाते हैं तब आपके अंदर से आवाज़ नहीं आती. कम से कम मेरे अंदर से तो नहीं आती, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जन गण मन महाराजा इंग्लैंड के लिए गाया गया रविंद्रनाथ टैगोर का एक गीत था, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय गीत बना दिया. सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक. तो जो चीज़ जब अंदर से आती है उसका महत्व अलग होता है, और चीज़ हम दिखाने के लिए करते हैं उसकी बात ही नहीं होती, उसका कोई महत्व नहीं होता. जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, अभी मैं बात ही कर रहा था तो लगभग करीब 125 अमेंडमेंट्स अब तक हो चुके हैं, और इन 125 अमेंडमेंट्स के अंदर मेरे ख्याल से 112 या 15 अमेंडमेंट्स ओनली ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड्स हुए हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने होगा तो शाहबानो केस होगा. इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जब हारी तो इमरजेंसी लगा करके किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म किया गया, मार दिया गया, यह भी आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है. तो कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या, हम कॉमन लोगों को किसी को नहीं पता. वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ एक्चुअल. हम एक तरफ सेक्युलरिज्म की बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जब प्रैक्टिकल में बात आती है तो हम बात करते हैं मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू ऑल डिवाइडेड. नथिंग लाइक दैट. इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हमें नहीं मालूम, और उसके बारे में आज जो एक मॉडल ऑफ डेवलपिंग इंडिया के अंतर्गत जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पिलर को हमारे सामने आज बुलाया गया है, हमें उन सुनने के लिए हम आतुर हैं. अब मैं आऊँगा एजुकेशन के लिए. तो एजुकेशन की हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी आपकी मैं कहूँगा कि दुर्भाग्य है कि इसे स्टेट और सेंटर सब्जेक्ट के रूप में डिवाइड करके इस तरह से इस खात्मे को जो अंग्रेज़ ने चालू किया था उसको अभी भी चालू रखा गया है. अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब लागू की गई तो कुछ स्टेट बोलते हैं कि हम इसे नहीं मानेंगे, वी विल नॉट एक्सेप्ट. ना ಇದು यहाँ स्टेट इम्प्लीमेंट பண்ண மாட்டேன். What is this? This new education policy is so good. First time an attempt has been made to correct some mistakes that has been committed. But due to political reasons, these governments, whoever the government is, are all doing all sorts of, I'm sorry to use the words, nonsenses in the name of their vote bank. To capture, to remain their vote bank, they are doing all these things. Therefore, as far as educations are concerned, अब यहाँ पर यदि आप हिंदी में बात करो, मैं आपको एक सीधा सिंपल उदाहरण देता हूँ. अभी हमने एक 2 दिन का कार्यक्रम किया था श्री वल्लभाचार्य का. हमारे वल्लभाचार्य विद्या सभा है, हमारे गुरुजी आए थे, हमने वल्लभाचार्य का एक 2 दिन का हमने बाहर एक हिंदी में बोर्ड लगाया. 3 पेज का नोटिस आ गया कि आप हिंदी में बोर्ड कैसे लगा सकते हो, आपको तमिल में बोर्ड लगाना चाहिए. अरे आप ये बोलो कि आप तमिल में बोर्ड क्यों नहीं लगाए, आप तमिल में बोर्ड लगाओ, आप हमारे हिंदी पे ऑब्जेक्शन कैसे करते हो. हमने यहाँ पर जब एक गाय की पूजा हुई थी, गाय की लिम्पी की बीमारी चली थी, उस समय हमने एक गौ सेवा किया था, ये यज्ञ किया था. मिनिस्टर साहब का फ़ोन आता है कि आप हाउ कैन यू परफॉर्म गो हवन इन योर कॉलेज. अब जब इस तरह की बातें एजुकेशन के अंदर करके उसे ख़त्म करने के किसी तरह से हिंदू धर्म में बात नहीं करूँगा, हिंदू संस्कृति को जो तोड़ने की बात चल रही है, और जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी न जाने किसी न किसी का लॉ के अंदर, बाई लॉ के अंदर सेक्शन सब सेक्शन के अंदर सारी मातापोड़ी करके हम लोगों के सामने परोसी जाती है. तो उस समय अश्विनी उपाध्याय जैसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है जो PIL के माध्यम से सरकार को बार बार चेताते रहते हैं. मैं समझता हूँ कैसे अश्विनी जी, हमारी जो भाषा की प्रॉब्लम है उसको भी आप ऊंचे हद तक लेके जाएंगे, बोथ एट स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल, और इसका कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन देंगे. थैंक यू वेरी मच. When you wait, the heart grows fonder. So you have waited enough. I think your heart has grown fonder and fonder. I'll invite the Utsav Murti of today's function,
Shri Ashwini Upadhyay, We need a with standing applause. with an Urdu couplet. कुमार जी के बाद मैं रोक नहीं पाया अपने आप को. मैं दावत दे रहा हूं श्री अश्विनी उपाध्याय को कि वो आएं और इस शेर के साथ कि आपके नाम से ताबिंदा है उन्वान नया, वरना क्या बात थी मेरे अफसाने में. आइए. भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे We are here to discuss constitutional challenges. These are organized by Model of Developing India. Can we go in only English or English Hindi mix? Only English? Okay. Mix. Okay. Hindi English mix. Fine. So, मंच पे उपस्थित सारे वरिष्ठ जन, मंच के सामने उपस्थित सारे वरिष्ठ जन, सबको मैं प्रणाम करता हूं. और यहाँ बुलाने के लिए मॉडल ऑफ डेवलपिंग इंडिया, विशेष तौर पे अशोक जैन जी का मैं धन्यवाद देता हूं. आज आपने मुझे बुलाया. मैं चेन्नई पहली बार आया हूं और तमिलनाडु हमारा सबसे पसंदीदा शहर है, लेकिन मैं चेन्नई पहली बार आया हूँ. रामेश्वरम आया हूँ, मदुरई आया हूँ, तिरुपति आया हूँ, लेकिन चेन्नई नहीं आ पाया. तो पहली बार मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका धन्यवाद देता हूँ. अशोक साहब said वंदे मातरम, and we feel something different when we sang वंदे मातरम. जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया. पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, एक चीज रह गया कि व्हाट इज आवर नेशनल एंथम. इंटायर फ्रीडम मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन वंदे मातरम, भारत माता की जय. देयर वाज ए मूवी Vande Mataram, Bharat Mata Ki Jai. There was a newspaper from the Lahore, that was the Vande Mataram. Ram Prasad Bismil wrote a ghazal, Vande Mataram. So everything, it was like a war cry. Vande Mataram, Bharat Mata Ki Jai. On the last day, 24th January 1950, entire constitution was over. Only one thing was left, that was what is our national anthem. Even the Congress meeting was, generally it started with the Vande Mataram. There was no use of Jan Gan Man even in the Congress meeting. And even 1985, 86, 87, Guru Rabindranath Tagore sang Vande Mataram. कांग्रेस के अधिवेशन में जनगण मन नहीं गाया जाता था, कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जाता था. On the last day, that is the 24th January 1950, there was a situation that no, we want voting on this issue. Similarly, if voting happened, definitely Vande Mataram won. Then Dr. Rajendra Prasad taken a middle path. He told, let's do one thing. Let the Jan Gan Man and Vande Mataram both are our national anthem. So technically, Vande Mataram and Jan Gan Man both are our national anthem. And if you Google a PIL, my PIL is pending in the court.
where I have filed that why Vande Mataram is not, there is no any protocol to sing Vande Mataram. We have a protocol for Jangadman that it will be 52 seconds. This music is fixed, how to sing, everyone will stand. There is a protocol, but there is no protocol for Vande Mataram. So my PIL is pending there. If you Google the Vande Mataram Ashwini Upadhyay, you will find it, where I am seeking that there should be a protocol, there should be standard music, and if someone insert Vande Mataram, there should be some punishment also. That matter is going on. You know, this is the Constitution of India. Huh? It is Constitution of, please, हम यहाँ भाषण देने नहीं आए, हम आप लोगों से डायलॉग करने आए। मैं जब भी कुछ पूछूं, इतना जोर से बोलिए, आपकी आवाज यहां तक आए, और यहां तक क्यों आए मैं आपको बता रहा हूं। मैं केवल आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं लगभग 1 करोड़ लोगों से बात कर रहा हूं। 1 करोड़ से कैसे कह रहा हूं? क्योंकि आपके इस प्रोग्राम की छोटी छोटी क्लिप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल पे देश के और यूएस वगैरह के लगभग 500 यूट्यूबर जुड़े हुए हैं, तो वो अपने अपने यूट्यूब पे डालेंगे, अपने अपने फेसबुक पे डालेंगे। तो हमारी आपकी बातचीत आज जो कुछ होनी है वो लगभग 1 करोड़ लोगों तक जाएगी। 5 मिलियन हमारी रीच है, जो मेरे खुद की फेसबुक की रीच है मंथली। मेरे फेसबुक की खुद की रीच 5 मिलियन की है, लेकिन टोटल 1 करोड़। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सुनिए मत, इतना जोर से बोलिए कि पूरी दुनिया को पता चले कि चेन्नई में एक प्रोग्राम हुआ है और चेन्नई की आवाज इधर तक आ रही है। सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत। यस, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अरब। इज इट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अरब? Is it Constitution of UK? No. Constitution of US? No. It is Constitution of Bharat. So, what is the constitutional ethos? The constitutional ethos is to protect dignity of Bharat, to protect and promote identity of Bharat, to protect and promote religion of Bharat, to protect and promote language of Bharat, to protect and promote culture of Bharat. So Constitution says, this Constitution directs the governments, this Constitution directs the central government and the state government, this Constitution directs MLA, MP, every public servant, that please you protect and promote identity of Bharat. You protect and promote unity of Bharat. You protect and promote integrity of Bharat. So protect and promote identity, dignity, religion, culture, custom. You have to weed out casteism. You have to weed out communalism. You have to weed out regionalism. You have to weed out linguism, which Ashokji says. So this is the duty of MLAs, MPs, Home Minister, Chief Minister, State Minister, Central Minister, everyone, to weed out corruption, casteism, communalism, regionalism, linguism, etc., etc. But who is spreading casteism? Who is spreading casteism? Politicians, who are supposed to strengthen the unity and integrity of Bharat, are promoting and propagating casteism. Who are supposed to promote and propagate identity of Bharat, unity of Bharat, custom of Bharat, tradition of Bharat, they are promoting linguism. No Hindi, Tamil. And unfortunate, they love foreign language. They speak in foreign language. Even I am speaking right now foreign language. The person
the political parties who are opposing Indian language are supporting and propagating and promoting foreign language. The politicians who are opposing Indian culture, Indian tradition, Indian custom are promoting, propagating foreign custom, foreign religion in the name of secularism. In the name of secularism. अगर आपका ड्राइवर आपसे 15,000 रुपए ले लेकिन गाड़ी न चलाए और गाड़ी उल्टी चलाए, फॉरवर्ड गियर की बजाय रिवर्स गियर में चलाए, तो क्या आप बोलोगे? बहुत नमक हराम है. क्या है? यू अंडरस्टैंड हराम? बहुत नमक हराम है. Like it is duty of the doctor to give medicine in the best possible way, best medicine. It is duty of the driver to drive the vehicle in the safest way, in the best way. It is duty of the barber to cut the hair in the best way. It is duty of our dry cleaner, dhobi, to clean the clothes in the best way. So what is the duty of the MLAs, MPs? What they take the oath? इसमें शपथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. देयर इज अ शेड्यूल 3, देयर इज ओथ. आई सोन स्वामी जी क्या लेते हैं ओथ? I will uphold the constitutional ethos, I will uphold the constitutional morality, I will uphold the constitution, I will act in the spirit of the constitution. So what is the constitutional ethos? What is the constitutional morality? What is the constitutional obligation? What is the constitutional duty? To minimize corruption, casteism, communalism, linguism, religionism, and promote Indian culture, Indian tradition, Indian language, Indian religion. This is their duty. But they are doing just opposite. Not everyone, but most of. You may consider your state, you may consider, just you imagine about your MLA, just you imagine about your MP, what he is doing. I don't know whether your MLA and MP is doing in the spirit of the constitution, whether your MLA MP is doing in the oath of the, in the spirit of the oath of the constitution, otherwise just doing opposite. You analyze. You means not only the person sitting in the hall. Because I am talking for the country. Why they are doing it? Why the person who are supposed to minimize casteism are promoting caste? Why? Please speak. Why they are dividing us? Vote bank. Why they want to vote? Please speak loudly. Please speak. Why they are dividing us? For vote? Vote bank. What is the purpose of vote bank? Power. What is the purpose of power? To loot. To loot your hard-earned tax money. This is the fact. The total budget of Bharat is 74 lakh crore this year. Last year it was 70 lakhs crore. This year it's 74 lakhs crore. So on an average 20% is the commission money. On an average, minimum 20% goes in every department, whether it's a PWD or the health department or education department, every department, 20% corruption. So means if we take the 70 lakh crore, 20% of 70 lakh crore is the 14,000 crore. 14 lakh crore. तो 14 लाख करोड़ आपका दिया हुआ पैसा हर साल लुट जाता है. आप अपने बेटे को 500 रुपए देते हो, अगले दिन आके कहता है पापा 500 रुपए और दे दो, तो पूछते हो कल तो दिया था, वो क्या किया? पूछते हो कि नहीं पूछते हो? नाई को 50 रुपए देते हो बाल कटवाने का, बोले नहीं 60 दे दो, बोले क्यों 60 दे दे भाई, 50 रुपए होता, 50 रुपए लो, 60 क्यों देना?
घर में काम वाली को 3,000 देते हो, उसका ईयरली ही इंक्रीमेंट करते हो, रोज रोज नहीं करते। लेकिन आपका दिया हुआ हर साल 14-15 लाख करोड़ रुपए जा रहा है, उससे ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में फार्म हाउस खरीदे जा रहे हैं, यूके में फार्म हाउस खरीदे जा रहे हैं, अमेरिका में फार्म हाउस खरीदे जा रहे हैं, बड़े बड़े बंगलो बन रहे हैं, कनाडा में बंगलो बन रहे हैं, ब्राजील में बंगलो बन रहे हैं, और आपको चिंता ही नहीं है। 500 रुपए भतीजा मांग ले तो देने में सोचते क्यों दे, 500 रुपए एक्स्ट्रा नाई मांग ले तो देने में सोचते क्यों दे, धोबी मांग ले 100 रुपए ज्यादा तो देने में सोचते क्यों दे। और यहां वो आपसे 15 लाख करोड़ ले जा रहे, फिर भी उनको माला भी पहना रहे, बोले जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। उनको बर्थडे को बुला भी रहे, साहब आ जाना, बर्थडे पे आ जाना, साहब शादी में आ जाना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, प्लीज, they are honest politician, there are very nestless politician, there are very karmi yogis, not out. But just you think about your MLA and MP. I'm not asking you to think about everyone. Just you think about your MLA MP. Recently I filed a PIL in the Supreme Court seeking a renaming commission. Matter came, I told him that it's not a matter of simple matter of renaming. It's a matter of our fundamental duty, fundamental right. It's a matter of sovereignty. It's a matter of right to identity, right to dignity, right to culture, right to religion, right to tradition. What is happening? जो कुछ बाइबल में लिखा हुआ है, जिन स्थानों का नाम, वो स्थान आज भी एग्जिस्ट करते हैं 2000 साल के बाद भी, उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए अगर आप बाइबल को कोई कहे तो मिथ है, तो बोलेगा नहीं मिथ नहीं है, देखो इसमें यह लिखा हुआ, ये जगह यहां उपलब्ध है। What is written in the Quran, the same place exists as it is in the same name even after 1400 years. तो कोई कुरान को मिथ नहीं कह सकता, बोलेगा देखो इसमें लिखा हुआ है ना, फला मक्का लिखा है, मक्का है, मदीना लिखा है, मदीना है। But unfortunately, even our children now doubting our Mahabharat, Ramayana. Why they are doubting? Because the places mentioned in the Mahabharata, in the Ramayana, in the Valmiki, in the Shiv Puran, in the Skanda Puran, does not exist. भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, याद है आपको महाभारत में? 5 villages. One was Indraprasth, one was Tilprasth, one was Panprasth, one was Vyagprasth, one was Sonprasth. You search these 5 villages, you will not get. Because Indraprasth became Delhi, Sonprasth became Sonipat, Panprasth became Panipat, Vyagprasth became Bagpat, and Tilprasth became Faridabad. One dacoit, one barbaric dacoit, who destroyed our temple in the Tilprastha, who killed our fathers, even who raped our mothers, who looted our gold and changed the nameplate, made Tilprastha to Faridabad. Unfortunately, our MLAs, MPs, who are supposed to promote and propagate Indian culture, Indian tradition, Indian ethos, Indian morality, Indian tradition, Indian religion, Indian language, never discuss this issue in Parliament and the Assembly. This is their duty. This is not my duty. This is their duty. Because they are getting salary, pension, security guard, big bungalow, etc., etc. for what? Just only to cut the ribbon? What is their duty? What is their duty of? They are public servant. MLAs and MPs are public servant. Judges are public servant. High Court judges are public servant. Supreme Court judges are public servant. IS officers are public servant. Everyone is a public servant. So what is the duty of the public servant? Serve the public.
but they are not performing their duty religiously, honestly. In fact, most of them are doing just opposite. We know the birthplace of Lord Krishna, but we don't know the birthplace of Rukmini. Where is the birthplace? That does not exist in the same name. We know Lord Parasurama, the sixth incarnation of Lord Vishnu. Do you know the birthplace of Lord Parasurama? No, we don't know. This was the duty of the governments. This is the duty of the government, state government, central government, to identify our religious places, which are mentioned in our Vedas, Purans, Gita, Ramayana, Valmiki Ramayana, etc. Rishi Jamdagni is the father of Lord Parasurama. Last week I visited that place. There is a place in Uttar Pradesh, and name was the Jamdagni Puram. It is just near the river Gomti. Mother name is the Renuka. भगवान परशुराम के माता का नाम रेणुका है और भगवान परशुराम के पिताजी का नाम ऋषि जमदग्नि है. गोमती नदी के किनारे, नदी के एक तरफ माता रेणुका का बर्थ प्लेस है और नदी के दूसरी तरफ महर्षि ऋषि जमदग्नि का आश्रम है. One invader named Jauna Khan. Jauna Khan went there, invaded the Jaunpur, destroyed the temples. There is a one temple dispute also, the Atala. I don't know whether someone from the UP here. उसने एक मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया, उसका नाम है अटाला मस्जिद, जिस पे डिस्प्यूट भी चल रहा है. और उसने जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया. विदेह, राजा जनक, the father of Mata Sita, he established the city named Videh. One Muzaffar Khan went there. He looted the Videh, changed the name plate, made Videh as the Muzaffarpur in Bihar. जब पांडव अज्ञातवास कर रहे थे तो आपको याद होगा, महाभारत देखा होगा, वो विराट नरेश के यहां रुके थे. याद है आपको? जब उनका अज्ञातवास चल रहा था वो विराट नरेश के यहां रुके थे. एक होशियार खान नाम का लुटेरा गया, लूटा, तोड़ा, रेप किया, मर्डर किया और उसके बाद नेम प्लेट चेंज कर दिया. विराट को उसने होशियारपुर बना दिया. अब आप ये बताइए, इसको बदलना सरकारों की ड्यूटी है कि नहीं? सांसदों की ड्यूटी है कि नहीं? अगर वो नाम नहीं बदले तो हम इसमें हाउ वी कैन से वी आर ए सोवरेन कंट्री? इट इज रिटन इन द प्रीएम्बल, वी आर ए सोवरेन कंट्री. हम एक स्वतंत्र देश हैं. अरे लुटेरों का नेम प्लेट हम हटा नहीं पा रहे हैं और हम कह रहे हैं हम स्वतंत्र हैं. डकैतों का, लुटेरों का, बलात्कारियों का नेम प्लेट हम हटा नहीं रहे और कह रहे हैं वी आर सोवरेन कंट्री. You know why the cultural difference between Tamil Nadu and UP and Bihar? आप लोगों की शादी दिन में होती है कि रात में होती है? यूपी बिहार में रात में होती है. क्यों? क्योंकि हम लोग मुगलों के गुलाम थे. हम एक चीज समझ लीजिए, 1000 साल पहले जो तमिलनाडु का कल्चर था वही यूपी का कल्चर था, वही बिहार का कल्चर था, वही बंगाल का कल्चर था, वही हरियाणा का कल्चर था, वही राजस्थान का कल्चर था. वेद में लिखा हुआ है हमारे सारे के सारे जो 16 संस्कार हैं वो दिन में ही होना चाहिए, सूर्य की रोशनी में होना चाहिए. सूर्यास्त के बाद तो अंतिम संस्कार भी पाप माना गया. बट वी एडॉप्टेड द नाइट मैरिज. व्हाई? क्योंकि वो दिन में उठा लेते थे. तमिलनाडु में आज भी मंदिर हैं. जैसे भव्य मंदिर तमिलनाडु में है ऐसे भव्य मंदिर यूपी और बिहार में भी थे. तमिलनाडु का बच गया क्योंकि मुगल यहां आए नहीं.
उसमें बहुत बड़ा योगदान शिवाजी महाराज का था, जिन्होंने महाराष्ट्र के बॉर्डर पर उनको रोक दिया था। लेकिन यूपी बिहार के खत्म हो गए, हरियाणा का खत्म हो गया, बंगाल का खत्म हो गया, आपका इधर राजस्थान वाले में मंदिर टूट गए। तमिलनाडु में मंदिर में शादी होती है, ज्यादातर मंदिर में होती है ना, पहले पूरे भारत में मंदिर में शादी होती थी। टेम्पल वाज आवर रिलीजियस सेंटर, कल्चरल सेंटर, ट्रांसमिशन सेंटर, कम्युनिकेशन सेंटर, इकोनॉमिक सेंटर, एजुकेशन सेंटर, हेल्थ सेंटर। जहां मंदिर होता था वहां एक गुरुकुल होता था, एक गौशाला होती थी, एक वेधशाला होती थी, एक व्यायामशाला होती थी, एक आयुर्वेदशाला होती थी, एक यज्ञशाला होती थी, एक विवाहशाला होती थी। लेकिन वो खत्म हो गया। किसने खत्म कर दिया? मुगलों ने। जिन मुगलों के कारण नॉर्थ और साउथ इंडिया में कल्चरल डिफरेंस आ गया, जिन मुगलों के कारण नॉर्थ और साउथ के कस्टम में, कल्चर में, ट्रेडिशन में डिफरेंस आ गया, उन मुगलों को हमने जिंदा किया हुआ है। जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को बांट दिया, उनको हमने जिंदा रखा हुआ है। इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है? और मैं आता हूं, चलो सरकारों ने जो किया तो किया, आते हैं जरा हम कोर्ट के ऊपर। शेड्यूल 3 में सबकी ओथ है, एमएलए ओथ, एमपी ओथ, हाई कोर्ट ओथ, हाई कोर्ट जजेस ओथ, सुप्रीम कोर्ट जजेस ओथ, प्राइम मिनिस्टर ओथ, चीफ मिनिस्टर ओथ। देयर इज ए form of oath. What is the oath of the judges? I will uphold the constitution. I will uphold the constitution means I will uphold constitutional morality. I will uphold constitutional ethos. This constitution is the for Indian, for Bharat, by Bharat, not for the foreign. This constitution is not meant to protect the identity of Mughals. This constitution is not meant to identity of Babar, Humayun, Ghazni, Ghori. But it's very unfortunate that our MLAs, MPs and judges, High Court judges and Supreme Court judges have bungalow on the Babar Road, Humayun Road in Delhi, Tughlaq Road. Rahul Gandhi Bangla is the Tughlaq Road. He behaved like Tughlaq also. Sometime Delhi, sometime Daulatabad, sometime Delhi, sometime. Just you think, हमें बाबर का नाम लेने में शर्म आती है और इन लोगों को बाबर रोड पर रह के अपना पता बताने में शर्म नहीं आती है. I don't know how they feel that my residence number is 22nd Babar Road. My residence number is 5 Aurangzeb Road. What is the Bangalore number? 6 Lodhi Road. What is the Bangalore number? 6 Humayun Road. 8 Shahjahan Road. और ये जितनी सड़कें हैं दिल्ली की, इनको किसी को मुगलों ने बनाया नहीं था. ये बाबर रोड, हुमायूं रोड, गजनी रोड, गोरी रोड, तुगलक रोड, जितनी दिल्ली में सड़कें हैं, इसको एक भी मुगलों ने नहीं बनाया. कुछ अंग्रेजों ने बनाया, बाकी की सारे नए वाले अंग्रेजों ने बनाया. कुछ 47 के पहले वाले अंग्रेजों ने बनाया, कुछ 47 के बाद वाले अंग्रेजों ने बनाया. जानते उन्होंने क्यों बनाया? उन्होंने इसलिए बनाया, इनके नाम पे बना दो, जब कल को लोग विरोध करेंगे तो देयर विल बी क्लैश. There will be clash. Just to divide and rule. हाई कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे लिखा होता है सत्यमेव जयते. हाई कोर्ट के जज जो होते हैं, सबकी चेयर पे लिखा होता है सत्यमेव. और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे लिखा होता है यतो धर्मस्ततो जय. दिस इज द श्लोक. एवरी सुप्रीम कोर्ट जज चेयर, इट इज रिटेन इन बोल्ड लेटर्स, यतो धर्मस्ततो. जहां धर्म होगी वहीं. अब ये बताओ, मैं कह रहा था इन आक्रांताओं का नाम हटाओ,
ये आक्रांता धर्म के साथ है या अधर्म के साथ है, बताइए जरा। ये अधर्मी है या धार्मिक है? ये धर्मी। चेयर पे लिखा है जिसपे बैठते हैं यतो धर्मस्ततो जय, तो उनकी ड्यूटी क्या है? जहां धर्म हो वहीं जय होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है, इस आर्टिकल 142, वेरी स्पेशल पावर टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस. This power is not only with anyone. Even Prime Minister don't have the power like Article 142. 142 power is only for the Supreme Court judges, which says to ensure complete justice, Supreme Court can use this power. Supreme Court judges can use this power under Article 42 to ensure complete justice. I was there. I told the court, please, this change of name. I requested him to direct the Home Ministry to constitute a renaming commission. Because what is going on, names are being changed, but in a piecemeal manner, in a political reason. Like they are changing the name, but they are not changing in the original way. They are changing their political party. Like Mayawati is doing Jyotiba Phule Nagar, Gautam Buddha Nagar, like this. My request is, please you change the name, what is mentioned in the Mahabharata, Gita, Ramayana, so we can easily identify the place. So that's why you constitute a renaming commission consisting the archaeologists, social activists, judges, advocates, journalists. You take the experts from all the field and let the commission examine the issue. I told also the court, it's not the matter of simple change, it's a matter of sovereignty. It's a matter of my right to dignity. It's a matter of my right to identity. It's a matter of my right to religion. It's a matter of my right to culture. And it's a matter of my right to information, right to know about the original names of the places. These are the constitutional fundamental rights. Supreme Court, I told that very important matter, so please permit me to give my petition to the Attorney General and Solicitor General and let them file the reply. No. You argue the case. I need at least one day to argue this case. No, you finish in half an hour. How can I finish half an hour? It's such an important matter. It has a national ramification. I have to cite so many judgments. I have to cite around 40 judgments on this issue. So please give me a full day. No, you start arguing the case. Ultimately, they permitted me to complete the argument in half an hour. I completed my argument in half an hour. They pass a judgment saying that we cannot grant such a prayer under Article 32. So that is, judgment is over. I have some other ways. I will find out the other ways also. There are other ways. But what I am saying, when Constitution says you are the custodian of fundamental right and you have the power under Article 142 and you say yato dharmastato jaya, you are sitting on the chair which says yato dharmastato jaya, then this is your duty to find out the roots, find out the ways to ensure that dharma wins. This constitution, I told the court, please appreciate that this constitution is not meant for the Babar, Humayun, Aurangzeb, Ghazni, Ghori. They looted and gone. But judgment says it's a finger on one community. One thing I would like to clarify today. Even after judgment was published day before yesterday, उसके बाद मैं किसी पब्लिक प्रोग्राम में गया नहीं, लेकिन आज मैं चेन्नई से कह रहा हूं, मैंने अपने पिटीशन में एक भी बार किसी कम्युनिटी का नाम ही नहीं लिया था. I don't know why the judges found the community there. I took only the names. I used the words barbaric. I used the words raped. This is the fact. They raped. They murdered. There was a jauhar. This is the fact. So I only used the fact. I not used even once Muslim. But judgment says this petition raises a finger on one community. I don't know how the justices found the
finger on one community. I just use the, this is the other fact that all these barbaric invaders are from the one community. This is the fact. This is the fact. This, all the barbaric invaders are from one community. साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप राइट टू रिलीजन को प्रोटेक्ट करेंगे। सवाल ये है कि दुनिया में 1000 रिलीजन है। कितने रिलीजन है? 1000। तो ये संविधान 1000 रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की बात करता है या जो भारत में शुरू हुए उनकी बात करता है? जरा जोर से बोलिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूं। दुनिया में 6500 भाषाएं बोली जाती हैं। 6500 लैंग्वेजेस आर देयर। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दिस इज ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट लैंग्वेजेस। नाउ द क्वेश्चन इज, all the 6500 languages are the languages of India. Language of India. भारतीय भाषा। ये भारत का संविधान है, खाड़ी देशों का संविधान नहीं है, चाइना का संविधान नहीं है, कोरिया का नहीं है, भारत का संविधान है। स्वाभाविक सी बात है, भारत की भाषाओं के लिए प्रमोट और प्रोपोगेट करता है। ऐसे ही जब रिलीजन की बात आएगी तो कौन से रिलीजन को प्रमोट और प्रोपोगेट करने की बात करेगा? ये भारत के। There is one act, Places of Worship Act. Name is very fine, Places of Worship. नाम से ऐसे लगता है कि टेम्पल्स के रखरखाव के लिए बनाया हुआ है। Places of Worship Act. It seems like it is for meant to manage, maintain, administer the places of worship. I challenge that act. It was made in 1991. That matter is going on in the Supreme Court. Dr. Swami is also with me. His second petition is Dr. Subramanian Swami. But he wanted only 2 temples. I want all the temples free. In the Supreme Court he says, if you accept my petition and you free 2 temples, Kashi and Mathura, then we will not claim. I told no. There are so many temples. So many temples even in Tamil Nadu also. In Kerala also, and temples in Tamil Nadu is equally important than the Kashi and Mathura. How we can say Kashi Mathura is, yeah, definitely it's important, it's a birthplace, but so many temples are there. Oh, so why should compromise on the 2 temples? This is matter of our right to religion. It's a very interesting place of prayer and place of worship. The act name is Place of Worship, but it is made to protect place of prayer. Please remember, mosque is a place of prayer. It's not place of worship. Church is the place of prayer, not place of. Temple is a place of worship. That's why once a temple, always a temple. Temple character never changes. Once a temple, always a temple. Even temple न भी हो, मेरे घर के सामने एक पीपल का पेड़ हो, हिंदी समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, पीपल का पेड़ है, मैंने वहां पे भगवान एक शिवलिंग स्थापित कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। अब अगर बाई द वे वो जो पीपल की डाल कोई टूट जाए तो टेम्पल का कैरेक्टर खत्म हो जाएगा क्या? नहीं। पीपल का पेड़ उखड़ जाए तो नहीं, टेम्पल रहेगा, कैरेक्टर चेंज। तो वैसे ही मंदिर में किसी ने आके ढांचा गिरा दिया, गुंबद गिरा दिया, दीवार तोड़ दिया तो टेम्पल कैरेक्टर चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल, वंस ए मॉस्क ऑलवेज ए मॉस्क नहीं। खाड़ी देशों में तो हर साल 1000-2000 तोड़ देते हैं, सड़क बनाने के लिए तोड़ते हैं, रेलवे स्टेशन बनाने के लिए तोड़ते हैं, एयरपोर्ट बनाने के लिए तोड़ते हैं, शॉपिंग मॉल बनाने के लिए तोड़ देते हैं, बिकॉज दैट इज द प्लेस ऑफ प्रेयर, सिंपल प्लेस ऑफ प्रेयर। ये अपना कॉलेज है, अभी अशोक साहब कह दें कि काम करो भाई, ठीक है, ये वाला हॉल प्लेस ऑफ प्रेयर में भी काम आ जाएगा, एक काम करो
फला फला दिन जिसको प्रेयर करना आ जाओ, प्रेयर कर लो। ये लेकिन इनको जरूरत पड़ेगी, इसको बदल देंगे। भाई देखो अब इधर इधर अब तो इधर ऑडिटोरियम होगा, अब इधर कुछ और ही चलेगा, उधर चले जाओ। एयरपोर्ट पे प्लेस ऑफ प्रेयर होता है, प्लेस ऑफ वर्शिप। रेलवे स्टेशन पे प्लेस ऑफ प्रेयर होता है। प्लेस ऑफ वर्शिप का मतलब जैसे ही आपने पूजा कर दिया, उस जमीन के मालिक भगवान हो गए, वो डीटी हो गए, शंकर जी हो गए, विष्णु जी हो गए, राम हो गए, जिनकी भी आपने प्राण प्रतिष्ठा किया। जब एक बार वो मालिक हो गए तो दोबारा आप मालिक कैसे हो गए? जब आप मालिक नहीं हुए तो आप कंप्रोमाइज करने वाले कौन होते हो? आप उनसे एग्रीमेंट करने वाले कौन होते हो? आप उस जमीन को किसी को देने वाले कौन होते हो? हो गए तो हो गए। मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस तरीके का कानून बना के 1991 में सरकार ने कौन कहे कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरिन जो मंदिर तोड़ा उनको रिस्टोर करने को एक कानून बना दिया है। हमारा राइट टू रिलीजन छीन लिया है, हमें कोर्ट जाने से रोक दिया है, राइट टू जस्टिस छीन लिया है, हमारी राइट टू डिग्निटी छीन गई है। अरे हम कहते हैं हमारे अंदर क्या है? आत्मा। यही तो बोलते हैं, आत्मा। और हम कहते हैं आत्मा ही परमात्मा। आपने अगर हमारा परमात्मा छीन लिया, हमारा प्लेस छीन लिया, प्लेस ऑफ वर्शिप छीन लिया, हम तो कहते हैं हम अंदर भी पूजा करते हैं। जब आत्मा अंदर है तो परमात्मा आत्मा एक ही है, तो हम तो अंदर भी पूजा करते हैं और बाहर भी पूजा करते हैं। हाउ यू कैन डिस्ट्रॉय माई प्लेस ऑफ वर्शिप, change my character, how you can change the character of my place of worship? That matter is going on the Supreme Court. What I am saying, the governments, MLAs, MPs, who are public servant, who are supposed to do public duty, who are supposed to promote and propagate Indian religion, Indian language, etc. I don't know whether they are getting some funds from foreign. I don't know. This is the question of law. This has to be identified. But I don't know. But definitely they are promoting foreign languages, foreign religion, foreign custom, foreign tradition, foreign culture in the name of secularism. This is going on. And why going on? Because we are divided. Because we are divided. They succeeded in to divide us on the basis of caste, language, etc., etc. Now there is a path is very open. एक बार बांट दिया, उनको पता है तो बट गए, अब इनको जो करना है कर लो। एक आदमी मंदिर के लिए लड़ेगा तो बाकी नहीं आएंगे, एक आदमी वक्फ बोर्ड के लिए लड़ेगा तो बाकी नहीं आएंगे, कोई इसके लिए लड़ेगा तो बाकी नहीं आएंगे, सारे एक होके आएंगे ही नहीं, तो बांट लो। So how to control? What is the solution? I am engineer. I was in Maruti. So I have a very discussion with the Japanese people. There is a one term, reverse engineering. There is a one term, reverse engineering. They generally use in Japan. आपको जापान की गाड़ियां आपको ना ज़्यादा उसमें मेंटेनेंस फ्री होती हैं। सामान्यतः आपको देखा होगा मारुति, होंडा, टोयोटा, इनमें कभी प्रॉब्लम नहीं आती है, मेंटेनेंस फ्री होती है, बस तेल भराओ, सर्विस कराओ, चलते रहो। क्यों होता है? एक बार जो प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम ठीक करने के पहले कहते हैं यू डू द वाई एनालिसिस, यू डू द रूट काज एनालिसिस, यू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द मैन फेल्योर, इट्स अ मेथड फेल्योर, मटेरियल फेल्योर, machine failure, what is the problem? And they do this why analysis on every aspect, even the social problems also. So their finding is, if you don't have the solution in the forward way, you find out the solution in the reverse way. मैं आपसे पूछता हूं, जातिवाद कौन फैलाता है? जरा जोर से बोलिए। नेता। कौन फैलाता है? किस लिए फैलाते हैं? सत्ता के लिए, वोट के लिए। सत्ता किस लिए चाहिए? लूटने के लिए, नोट के लिए।
जातिवाद फैलाते हैं वोट के लिए, वोट चाहिए नोट के लिए। भाषा का जहर घोलते हैं किसके लिए? वोट के लिए। और वोट क्यों चाहिए? नोट के लिए। तमिल बनाम बिहारी, तमिल बनाम या महाराष्ट्रियन बनाम हिंदू, या जो भी उल्टा सीधा जो भी करते हैं रीजन के आधार पे, क्यों करते हैं? वोट के लिए। वोट क्यों चाहिए? नोट के लिए। व्हाट इज द अल्टीमेट टारगेट? नोट। अगर ऐसा सिस्टम बना दें कि ये नोट कमा ही ना पाए, और कमा भी लें तो खर्च न कर पाए, दिस इज द रिवर्स इंजीनियरिंग। या तो ऐसा सिस्टम हो कि नोट कमा ही ना पाए, या तो ऐसा सिस्टम हो नोट कमा तो ले लेकिन खर्च ही ना कर पाए। तो क्या रुकेगा? जातिवाद। फिर क्या रुकेगा? भाषावाद। फिर क्या रुकेगा? क्षेत्रवाद। ये जितनी समस्या, फिर क्या रुकेगा? माओवाद, नक्सलवाद, खालिस्तान, सारी समस्या रुकेगी कि नहीं रुकेगी? इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अपना एग्जांपल। आई फाइल्ड ए पीएल इन सुप्रीम कोर्ट, प्लीज, बिकॉज जस्टिस सिस्टम इज वेरी स्लो, प्लीज कंस्टिट्यूट ए स्पेशल कोर्ट्स फॉर एमएलएज एंड एमपीज, because MLAs and MPs are honorable, they don't have very much time to go 20 years in the court. So please you direct the high courts to constitute a special court for MLAs and MPs to decide their cases within one year. Supreme Court in 2017, Justice Gogoi passed a landmark judgment. He directed all the state governments, all the high courts, please constitute a special court and decide the cases of MLAs and MPs within 1 year. अब तक 200 सांसद और विधायक को सजा हो चुकी है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो चुनाव लड़ने वाले थे, अब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐसे उनका मुकदमा 50 साल चलेगा। लेकिन गलती से अगर सांसद विधायक हो गए तो मुकदमा, और उनको पता है सजा होनी। आप लोग दिल्ली में सुनते होंगे राउज एवेन्यू कोर्ट, सुनते होंगे ना? सिसोदिया जी का आजकल चल रहा है, पढ़ा सुना होगा। वो राउज एवेन्यू कोर्ट भी हमारे पीएलपी बनी है। वो ऐसे इधर चेन्नई में भी बनी है, पूरे देश में बनी है, मदुरई में बनी है, पूरे देश भर में बनी है। लगभग 400 कोर्ट बनी हुई है, अब तक बन चुकी है एमएलए एमपीज के लिए। सो दिस इज द रिवर्स इंजीनियरिंग। अब वो इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते कि 20-50 करोड़ खर्च करेंगे, सांसद विधायक बन जाएंगे, जो मुकदमा 50 साल चलना था वो 1 साल में खत्म हो जाएगा, 1 साल में खत्म हो जाएगा तो सजा हो जाएगी, सजा हो जाएगी तो 6 साल के लिए जेल चले जाएंगे या 10 साल के लिए जेल चले जाएंगे। सो दिस इज द वे। In fact, the biggest threat the biggest constitutional challenges for us is the slow justice system, the ineffective, outdated colonial laws. मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, उन्होंने 1,500 से ज्यादा अंग्रेजी कानून खत्म कर दिए हैं। लेकिन एक बार आप लोग 15 अगस्त का उनका स्पीच सुनना। आप 15 अगस्त के दिन बोला था उन्होंने, हमें गुलामी की एक एक निशानी को खत्म करना है। मेरा मोबाइल है नहीं, मैं सुना देता यहां से, याद सुना आपने? 15 अगस्त को उन्होंने बोला था, हमें गुलामी की एक एक निशानी को खत्म करना है। गुलामी के कानून भी खत्म करने हैं, गुलामी की पुलिस व्यवस्था भी खत्म करनी है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था भी खत्म करनी है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था भी खत्म करनी है। और उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन मैं कह रहा हूं हमें गुलामी के नामो निशान मिटाना है। हमें नहीं चाहिए। आप जरा सोचो, हमारे 51 शक्तिपीठ हैं, हमारे 51 शक्तिपीठ हैं, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ। उसमें एक शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था। वहां पे एक मुर्शीद खान नाम का लुटेरा गया,
उसने कीर्तेश्वरी मंदिर को 1470 में गिराया, मंदिर को लूटा, सोना चांदी बहुत था, सब लूट लिया और कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना के चला गया। एक दूसरा लुटेरा था मिर्जा, विंध्याचल मंदिर को लूटा और विंध्याचल को मिर्जापुर बना के चला गया। एक लुटेरा था जौना खां, परशुराम जी के पिताजी के नाम पे जो जमदग्नीपुरम था उसको जौनपुर बना के चला गया। एक लुटेरा था मुजफ्फर खां, उसने राजा जनक सीता जी के पिताजी के नाम पे जो शहर था विदेह, उसको बिहार में मुजफ्फरपुर बना के चला गया। एक लुटेरा था होशियार खान, उसने विराट, याद है आपको राजा विराट के यहां जहां पांडव रुके थे, आपको याद होगा बाद में विराट नरेश ने अपनी बेटी का विवाह अभिमन्यु से किया था, उस विराट को होशियारपुर बना के चला गया। एक लुटेरा था गाजी, आया उसने गजप्रस्थ को लूटा, गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना के चला गया। एक लुटेरा था फरीद खां, तिलप्रस्थ को लूटा, नेम प्लेट बदल के उसको फरीदाबाद बना दिया। एक लुटेरा था बेगू खां, उसने अजात शत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया। एक दरभंग खान, द्वारबंगा को दरभंगा बना दिया। शरीफुद्दीन, नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया। हाजी शमसुद्दीन, हरिपुर को हाजीपुर बना दिया। जमाल खां, सिंघजानी को जमालपुर बना दिया। अहमद शाह, कर्नावती को अहमदाबाद बना दिया। बुरहान खान ने भ्रगनापुर को बुरहानपुर बना दिया। होसंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया। अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया। तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया। उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया। फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया। फरूख खान ने पंचाल, आपको याद है पंचाल नरेश, द्रौपदी का एक क्या नाम है, पांचाली। हमारे यहां कस्टम इतना बढ़िया था, राजकुमारों का नाम राज्य पे नहीं होता था, राजकुमारियों का नाम होता था राज्य पे। गंधार की राजकुमारी गांधारी, कैकेयी की राजकुमारी कैकेयी, कौशल की राजकुमारी कौशल्या, सौमित्र की राजकुमारी सुमित्रा, पंचाल की राजकुमारी पांचाली। एक लुटेरा था फरूख खां, उसने पांचाल को फरुखाबाद बना दिया। मुराद खान ने रामगंगानगर को मुरादाबाद बना दिया। मुजफ्फर खान ने लक्ष्मी नगर को मुजफ्फरनगर बना दिया। शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया। बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा को जलाया था यूनिवर्सिटी को, उसने वहां बख्तियारपुर बना दिया। करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया। महबूब खान ने महबूब नगर बना दिया। अली मीर ने अलीपुर बना दिया। भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया। इंदौर को निजामाबाद बना दिया। भिटौरा को फतेहपुर बना दिया। हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया। अंबिका नगर को अमरोहा बना दिया। आर्यमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया। जसनौल को बाराबंकी बना दिया। गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। अब आप ये बताइए, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वी आर ए सॉवरेन कंट्री, और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दिस इज द ड्यूटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड legislature to protect and promote Indian culture, Indian tradition, Indian ethos, Indian custom, फिर ये इन लुटेरों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियों को रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस है क्या? जोर से बोलिए जरा। पिछले 75 साल में इस पे जो काम 75 साल पहले होना चाहिए था, जो काम 1950 में हो जाना चाहिए था, उस पे आज तक चर्चा नहीं हो पा रही है। ये उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाया क्या? न तो एग्जीक्यूटिव ने निभाया, न लेजिस्लेचर ने निभाया, दुर्भाग्यवश जुडिशरी ने भी नहीं निभाया। ये कहने में हमें कोई तकलीफ नहीं है कि जो 3 दिन पहले जजमेंट आया है, मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 में पावर थी, वो यतो धर्मस्ततो जयः सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकते थे, रीनेमिंग कमीशन बना सकते थे, और ऐसे मैटर पे तो सुओ मोटो ले सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे मैटर पे पीआईएल की जरूरत ही नहीं है। ऐसे मैटर मैं पीआईएल क्यों करूं? आपकी ड्यूटी है, आपको इसी काम के लिए वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, सिक्योरिटी गार्ड, खाना बनाने वाला नौकर, चार्टर्ड प्लेन मिलता है। इसी काम के लिए मिलता है। और देने वाले कौन? देने वाले कौन? आप लोगों के वेतन, आप लोग उनको सिक्योरिटी गार्ड दे रहे हो, खुद को सिक्योरिटी हो चाहे ना हो, लेकिन उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था कर रहे हो।
और उसके बाद भी वो काम नहीं कर रहे हैं जिसकी शपथ लिया हुआ है। शपथ क्या ले रहे हैं? आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस, आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज देयर ड्यूटी. This is not in fact your duty, this is not in fact my duty. This is the duty of the MLAs, MPs and judges. This is the duty of the executive, legislature and judiciary. वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं. (1991) के बाद दूसरा एक कानून बनाया इन्होंने. पता नहीं इधर चर्चा है कि नहीं है, एक खबर आई थी लेकिन वक्फ एक्ट. वक्फ एक्ट जैसा कानून तो पाकिस्तान में भी नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं है, लेकिन भारत में बनाया गया. There is no procedure to find out the waqf property. There is no procedure to identify the waqf property. There is no procedure how to, when and how to send the notice. But they are sending the notice. This waqf board has become the biggest tool for conversion. In fact, the biggest tool for conversion and extortion. बड़े लोगों के यहां तो नोटिस भेज के पैसा लेते हैं, गरीबों के यहां नोटिस भेज के कहते हैं ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है. बोले साहब क्या करें फिर, कैसे करें? बोले कन्वर्ट हो जाओ. आपके तमिलनाडु का एक एरिया ऐसा भी तो होगा जो 400 किलोमीटर दूर होगा, कोई एक एरिया होगा, बॉर्डर के एरिया होगा. वक्फ बोर्ड का कहां पे है? चेन्नई में. 500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति, मान लीजिए वो ट्राइबल एरिया से है, जिसने कभी अपना थाना भी नहीं देखा, अभी अपना कभी जिला भी नहीं देखा, उसको वक्फ बोर्ड नोटिस भेजता है कि ये तुम्हारी जमीन ना तुम्हारी नहीं है, ये बाबर का घोड़ा यहां घास खाने आया था, हुमायूं का घोड़ा इधर घास खाने आया था, इसलिए तुम्हारी नहीं, वक्फ प्रॉपर्टी हो गई. This is happening in India, and we are saying no, we are very great country and we are so and we are a secular country. I challenge this act in the Supreme Court. Matter is going on there. I have challenged this also. You know, Waqf board, one member, one MLA, Muslim, one MP, Muslim, one IAS, Muslim, one town planner, Muslim, one advocate, Muslim, one mutawalli, Muslim. All the 7 members from one community. और वो आपके इस हॉल को नोटिस भेजेगा, तो नोटिस भेजने के लिए उसको कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है. वो सिंपली कह दे भाई ये जो अपना वैष्णव कॉलेज है तो वक्फ प्रॉपर्टी है, औरंगजेब की जो है, औरंगजेब का गधा इधर घास खाने आया था. अब आप दौड़ते रहिए, उसको कुछ नहीं करना, उसको सिंपल नोटिस भेज देना है. सो व्हाट इज हैपनिंग? जहां खुद की प्रॉपर्टी पे नोटिस आ रहा है तो लोग फिर भी फाइट करते हैं, लेकिन जो बगल में पार्क है, ऊसर जमीन है, बंजर जमीन है, खेल का मैदान है, गोचर जमीन है, ऐसे गांव में बहुत सारी अलग अलग टाइप की जमीनें होती हैं जो पब्लिक लैंड होती हैं, नॉट ओन्ड बाय समवन, इट्स अ पब्लिक लैंड. गोचर, ऊसर, बंजर एटसेट्रा एटसेट्रा, फॉरेस्ट लैंड. दे इश्यू नोटिस, दिस इज द वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी, and if you will not respond within 1 month, it will become like a waqf property. And in Tamil Nadu it happens. 1500-year-old village temple, 1500-year-old temple was claimed that is a waqf property. So this is happening. Similarly, one case, one girl committed suicide here. This is the name of the Lavanya. आपको पता है लावण्या? I filed a PL in Supreme Court for CBI investigation of this Lavanya suicide. I am not connecting the name. It I think is nearby Madurai is the place. Lavanya.
तंजावुर, यस तंजावुर। मेरे को उधर अखबार में पढ़ा कि एक लड़की को कन्वर्ट कर रहे थे, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। सो आई फाइल्ड ए PIL इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर CBI इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस लावण्या सुसाइड केस। मैटर वाज गोइंग ऑन in between Madurai bench, this Madurai High Court, director CBI investigation. But there were two more prayers that let there be a central law. What is happening presently? In the Indian Penal Code, there is a chapter 15 named offense relating to religion. And see the lacuna. Chapter name is the offense relating to religion. If you say something about any religion, it's an offense. If you hurt religious feeling, it's an offense. But if you convert by intimidation, convert by threatening, convert by luring gift, it is not an offense. So I told the Supreme Court that see the gap, see the lacuna. And unfortunately, there was an anti-conversion law in Tamil Nadu. Government repealed that law. You know, there was a one anti-conversion law in Tamil Nadu, but government repealed it. I made all the state government party in Supreme Court. I requested the court, Supreme Court issued notice to the central government, etc., etc. No state came to oppose my PIL. Only one state came. Only one state came. Yes. I don't know why. My demand is in Supreme Court, you direct the central government to amend this Indian Penal Code, make the conversion cognizable and non-bailable offense. This is my demand. I am fighting with the central government. Case is between me and central government, me and Home Ministry. What is the role of any state? But Tamil Nadu government intervened in my PIL and opposing my PIL. One Rajya Sabha MP, Mr. Wilson, used to appear in that case. And see the lacuna. एक सिपाही अपनी नौकरी में दूसरा काम नहीं कर सकता. इधर जो जर्नलिस्ट बैठे हैं, ये अपनी नौकरी करते करते दूसरा काम नहीं कर सकते. कर सकते क्या सर? नहीं कर सकते. एक दरोगा अपनी नौकरी में दूसरा काम नहीं कर सकता. कलेक्टर, इंस्पेक्टर कोई दूसरा काम नहीं कर सकता. लेकिन सांसद और विधायक वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला लेते हैं. सांसद वाला वकालत भी कर सकते हैं, कंपनियों में डायरेक्टर भी बन सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं उसको कहने की जरूरत ही नहीं. आप सब जानते हैं क्या क्या कर सकते हैं. Mr. Wilson gets salary, pension, Bangalore, security guard, free air ticket, free rail ticket. For what? To protect our constitution, to protect Indian religion. But what he is doing? He is fighting for missionaries. He is fighting in support of missionaries. If there is a law, central law, what is the problem? Let it be a law. मैं कह रहा हूं अगर कन्वर्जन करने को फांसी देने का भी कानून बन जाए तो किसी को क्या फर्क पड़ना चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. He is my good friend. In fact, he is my good friend. Why good friend? Because I also practice in the Supreme Court. So I can say that he is my good friend. But I don't know why Tamil Nadu government has instructed me to oppose my PL. I don't know why he is doing it. You know, if you weed out the corruption, 99% political party, आप क्या सोचते हो? भ्रष्टाचार खत्म तो सपा खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो बसपा खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो आम आदमी पार्टी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो आरजेडी खत्म.
So biggest challenges for our constitution, constitutional ethos, constitutional morality is the corruption. Now we have to find out the ways, and I think that is the reverse engineering. What is the reverse engineering? ये पैसा लोग खाते हैं क्या? जरा बोलिए सर, खाते हैं कोई? क्या करते हैं पैसे को? बैंगलोर खरीदते हैं, बाहर खरीदते हैं, बड़े बड़े लग्जरी कार खरीदते हैं, अब नौकर के नाम पे कुछ खरीदते हैं, खाना बनाने वाले के नाम पे कुछ, ऐसे तो करते हैं. I have filed one PIL. I don't know when I will succeed. I have filed PIL to link property with Aadhaar. The day property will be linked with the Aadhaar, 25% corruption will be reduced. I don't know how much time it will take. The matter is going on. Second, I think first step was in 2015. 16, I hope it will be, it was done by Modi ji. I hope it will come again. You know, I don't know when come, I don't know. जितनी बड़ी करेंसी होती है उतना ज्यादा हवाला होता है. जितनी बड़ी करेंसी होती है उतना ज्यादा ब्लैक मनी होता है. जितनी बड़ी करेंसी होती है उतना ज्यादा करप्शन होता है. भारत में 80% लोगों को पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं. केवल 20% लोग हैं जो 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं पर डे. और जो लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं कि उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ न कुछ है. तो 80% लोगों को 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है. जो 20% लोग ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई है, तो 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत है क्या? ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाएगी, देखते हैं कब बंद होती है. तो मुझे लगता है कि 25% भ्रष्टाचार वहीं खत्म हो जाएगा. प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो जाएगी, 25% भ्रष्टाचार वहीं खत्म हो जाएगा. और एक कानून जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून, उससे बहुत लोग परेशान हैं. नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून न होने से और झूठ बोलने के खिलाफ कानून न होने से इस देश में झूठ परोसा जा रहा है. कभी आपने सोचा कि प्रधानमंत्री को कितनी बार बोला गया चौकीदार चोर है? कोई कानून, किसी की सजा हुई क्या? पहले कहते थे टाटा बिरला चोर हैं, किसी को सजा हुई? फिर कहते अदानी अंबानी चोर हैं, किसी को सजा हुई? हमारे देश में ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो झूठ बोलने में किसी को सजा दे पाए. इतनी बार से हमारे बिजनेसमैन को कोई चोर बोल देता है. जिस व्यक्ति ने इस देश में लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, रोजगार दिया हुआ है, उसको कोई भी चूतिया टाइप का आदमी कहता था चोर है. अदानी चोर है, अंबानी चोर है. अदानी अंबानी के यहां नौकरी करने लायक भी नहीं हो, लेकिन कहता है चोर है. और अदानी अंबानी मजबूर हैं कि उसके खिलाफ एक शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई कानून ही नहीं है. हिंडनबर्ग के खिलाफ अमेरिका में जाके अदानी ने कार्रवाई किया है, लेकिन भारत में जो लोग अदानी को चोर कह रहे थे वो एफआईआर नहीं करा. जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है. नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून है नहीं, झूठ बोलने का कोई कानून है नहीं. ऐसे में बहुत ज्यादा हमारा जो बिजनेस क्लास है ना बहुत परेशान है, खासतौर पर प्रोमिनेंट लोग बहुत परेशान हैं. एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाएगा, इस टाइप की घटनाएं बंद होंगी, दहेज के फालतू मुकदमे बंद होंगे, रेप के फालतू मुकदमे बंद होंगे, छेड़छाड़ के फालतू मुकदमे बंद होंगे, जस्टिस सिस्टम स्पीडी हो जाएगा, और सबसे बड़ा कि जो झूठे आरोप लगाते हैं वो बंद हो जाएगा. तो मुझे लगता है कि जो जुडिशियल सिस्टम है ये ठीक हो जाएगा, इस देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा. दुर्भाग्य ये है हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाकी चीजों पे सुओ मोटो लेते हैं, लेकिन जस्टिस सिस्टम को स्पीडी करने के लिए कभी सुओ मोटो नहीं लेते. ये उनकी ड्यूटी है. ये तो धर्मस्ततो जय कुर्सी पे लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते कुर्सी पे लिखा हुआ है, लेकिन न सत्य जीत पा रहा है न धर्म जीत पा रहा है. देखते देखते सत्य को जीतने में 50 साल लग रहा है, धर्म को जीतने में 50 साल लग रहा है, 40 साल लग रहा है, फिर काहे का ये तो धर्मस्ततो जय. आशा करता हूं कि जिस तरीके का एक मूवमेंट शुरू हुआ है राइट टू जस्टिस का, शायद पूरे देश में हर जगह से आवाज आएगी
कि हमें जस्टिस चाहिए. वी वांट जस्टिस, वी वांट डिग्निटी, वी वांट identity, we want our right to know, we want our right to religion. I hope that very soon we'll see something, some changes in the judiciary also, will some changes throughout the country. आप लोगों ने मुझे इतनी देर सुना, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं. जय हिंद, जय भारत. I hope, definitely, the movement always starts from the south, because the land of south has got a message for Bhavya Bharat. And I am really thankful to each one of you who have even traveled from Mysore, Salem, Madurai, any part of the southern India. They have come here to hear you, Sir Ashwini Upadhyay. And it is only because of your love and affection that things are happening. I am requesting the dignitary people who are the audience, such a knowledgeful audience, they have something. Yes, what can I give it to Ashwini ji? So I request all of you that whoever want to have felicitation to Ashwini ji Upadhyay, they can come and definitely they can have a felicitation. After felicitation is over, we are just having our vote of thanks and with national anthem. I will call Sri Subbaram Srinivasan of our Model of Developing India, and followed by Subbaraman Srinivasan ji, Sri Kailash ji Choradia, anybody audience they want to have, they can come. Please make it a fast. Anybody from the audience, sir, please make it a fast. Kailash ji Choradia. And after this program, Rajasthani Association and RYA, they have the second series of Sri Ashwini Upadhyay ji, Mr. P.N. Subramaniam ji, our Model of Developing India's another star. Kailashi Choradia for Kumar Rakesh. Kumar Rakesh, he has worked almost with the Vajpayee ji till now Modi ji, with the Prime Minister, several Prime Ministers. Anybody is there, please? Sri Saravanan Sundaramurthy from IIT, and he is another Model of Developing India. And Saravanan Sundaramurthy, Sri Rajshekhar from Chakra Foundation. Saravanan Sundaramurthy from IIT Chennai is another from Model of Developing India team member. Sri Suresh Lal, IIM, and he is from Salem. All the way from Salem he has come down here. Sri Suresh Lal. I think Ashwini ji Upadhyay program we are going to have in after 3 months for entire Tamil Nadu trip. Bole Bharat Mata ki, Bharat Mata ki. Anybody else? अरे यार आप भगवा पहना करके मुझे ये कर दिया आपने. कुमार राकेश को अगर मंच दिया जाए तो करीबन 2.5-2 घंटे हमें को लगेंगे इसके. लेकिन मैं फिर से I have got many of my best friends, and I have to say only one thing. The social media is, I think, definitely it's got a strong message. I think I have been troubled you people by sending my messages, voice, and it was the only intention. Please come and hear the voice of the heart.
Sarvanan Sundaramurthy ji. Take this to honor you because without you, all of us would have not been here. It's my pleasure. Thank you. I think I have to say some few words about the audience who have come. Then we will have vote of thanks. Sri Mayan Sendil Kumarji, he is a popular YouTube, and he is actually basically a cosmic connectivity. I cannot express what he is, but something invisible power which he has got. So Mayan Sendil Kumarji, I am mentioning the name Mayan Prapancha Sendil Kumarji. Lakshmi Narayan Swamiji has come all the way from Mysore, and Sri R.B. Chaudhary ji has come from the Animal Welfare Board of India. Sri Raj Shekhar has come from Chakra Foundation. Tejanandji Maharaj ji has come from Chennai. None other than my neighbor and one of the best chartered accountants, Sri Mukesh ji Mehta of Swaminarayan Temple is here. So I can see only, I can use the word Rajendra ji Mehta, everybody's name. My classmate Bhavanesh Devda, best friend, the person contested against CM is sitting here, you know. Do you know the person who contested against Kalanjar is sitting here? He is none other than Mayappan, the advocate Mayappan. He has contested again, right? So my friend Balaji, so there are numerous people. R.B. Chaudhary ji, he runs Pashu Mitra magazine. Because there is a discussion about the cows and animals. So I think now it's a time that once again from my heart I thank you all, and this shows the power of Bhavya Bharat, and this I will conclude with one line. Yeah, please. Model of developing India. A just thought came. I'll just say this line. Yeah, Mukesh ji Mehta, please. अरे यार भाई हम तो सबको बुला रहे हैं, आप पधारिए स्टेज पर. आप जिनको जिनको करना जल्दी कीजिए ताकि फिर हम अगले कार्यक्रम के लिए चलें. So this model of developing India, a thought came somewhere in the March. Then I just wrote it and kept it quiet. Then after a day, suddenly I thought, I said, this model of developing India is a good. I just need 2 minutes of this. Why these people of model of developing India, such jewels are here. That's the reason. Then somewhere I just looked into the MODI. I said, ये तो मोदी बन रहा है यार. तो मैं बोला शुरू कर देते भाई. So we have started that model of developing India and was launched in none other than 22nd July 2022 at the place where there is a positive vibe is there. Is none other than at Avni Orchard. The simplest man on this earth is Dr. Pratap Hegde ji, who is just sitting behind, off the dais, and that's where we have started. The energy started from this model of developing India is called a MODI. So this is how this thing has started. So you are all the part of this model of developing India, and these are all the people, they have come together. So once again, my pranam, my namaskar, and my vanakkam to all of you. Now I request Sri P.N. Subramaniam ji, our Model of Develop India's Modi's team, to please for vote of thanks. And after vote of thanks, national anthem. And while leaving, Mahaprasadam from ISKCON Salem Temple, Swamiji has. So please collect that Mahaprasadam to take this Bhavya Bharat message through Ashwini ji to your home also and to others also. And after that, the Rajasthan Association Karikram. Thank you so much for all your love, support, and your confidence. Thank you so much. What an outstanding, compelling, and powerful talk. I hope you all agree with me on that.
On behalf of Models of Developing India Group, I thank our chief guest, Shri Ashwini Upadhyay ji, who spared time to travel all the way from Delhi and be with us today and gave us all his inputs on the Constitution. Sir, your in-depth coverage opened our minds, and we are all charged. I hope you're all charged. We are all charged to protect the Constitution of Bharat. I thank Shri Kumar Rakesh ji from Global Governance News for coming all the way from Delhi to address us. Our sincere thanks to DG Vaishnav College for providing a beautiful venue and all the facilities, fantastic facilities that they provided. We thank Sri Ashok Mundra ji, Sri Ashok Kedia ji, and the technical team, from DG Vaishnav College. We also thank Rajasthani Association and RYA, Sri Praveen ji Tatia, and Sri Lalit ji Likmichan. Sorry, I'm sorry. Please, my apologies. Sri Likmichan ji for supporting our high-tea costs and being with us here. Then we thank Lalit ji Talawat. We thank Madhav ji Hebar for coming all the way from Bangalore with his very exciting pencil project, pencil from paper, which is outside. You must have all seen that. We also thank ISKCON Salem for giving us the Mahaprasad. So please don't forget to take the Mahaprasad from outside, as he said. Finally, we thank all of you to have come all the way from wherever you are. I think some came from Madurai, Salem, and various other places, and also from Chennai. And especially, and yeah, he is part of us. So he is our driving force. So all of you who came from various places and spared your time on a Saturday afternoon and evening, I think you really graced us, and we are very thankful to you to have been present here and supporting us. Thank you again. No, 1 minute. Before 1 minute, my pranam to Swamiji from Tirupati, because tomorrow Ashwiniji's family is going from here to Tirupati for darshan. So all the way from Tirupati, the Mathadipati Swamiji has come and sitting in front and giving that blessings to the Ashwini ji. Arey bhai chaliye aap bhavya Bharat badliye karke. So I pranam to Swamiji who has come here. So it's so nice, though we have maintained the time. So Swamiji, if yeah, I wanted to have the prasad of conclusion from Swamiji. So Namo Narayana's blessings is to Ashwini ji. Give a Namo Narayana. Bharat Mata ki, Bharat Mata ki, Bharat Mata ki. On behalf of Rajasthani Association Tamil Nadu and Rajasthan Youth Association, as it was informed, I invite and request all of you to kindly join for the next session with Ashwini Upadhyay ji, the program being organized by Rajasthani Association Tamil Nadu and Rajasthan Youth Association. We will go for high tea. In the meantime, Ashwin ji will take some break and will join us by 7 o'clock, and we'll have a next session
at the next auditorium, the bigger auditorium there. I request and invite everyone, kindly join, don't leave, please join for the next session. Thank you. We'll stand for national anthem. मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल दलति तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता जन गण मंगल जायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। प्रणाम वणक्कम।